پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے پینوکیو کی کہانی، دا اسٹوری آف پینوکیو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اٹلی کے ملک میں جپیٹو نامی ایک شخص رہتا تھا جو لکڑی کی خوبصورت گڑیاں بناتا تھا۔ وہ تنہا رہتا تھا اور اس کا خواب تھا کہ اس کا ایک بیٹا ہو جس کے ساتھ وہ اپنا سارا پیار بانٹ سکے۔ ایک دن جپیٹو نے لکڑی کا ایک چھوٹا سا لڑکا بنایا۔ جب وہ کام ختم کر چکا تو جپیٹو نے بھر کر کہا، کاش لکڑی کا یہ لڑکا اصلی ہوتا اور میرے ساتھ یہاں رہ سکتا۔ اچانک ایسا ہی ہوا۔ چھوٹے لکڑی والے لڑکے میں جان آ گئی۔ جپیٹو نے خوشی سے ہنستے ہوئے کہا، خوش آمدید، میں تم کو پینوکیو کہہ کر پکاروں گا۔ جپیٹو نے پینوکیو کو لباس تبدیل کرنے میں مدد کی، اسے کچھ کتابیں دیں، گال پر چوما اور پڑھنے لکھنے کے لیے اسکول بھیج دیا۔ لیکن اس نے اسے متنبہ کیا، جیسے ہی اسکول کا کام ختم ہو جائے پینوکیو کو گھر آنا چاہیے۔ پینوکیو نے جواب دیا، اچھا، اور خوشی خوشی اسکول کی طرف چل پڑا۔ Once upon a time there was a man called Geppetto who lived in Italy. He used to make beautiful wooden dolls. He lived alone and his dream was to have a son with whom to share all his love and affection. One day, Geppetto made a little boy out of wood. When he finished, Geppetto sighed, I wish this wooden boy was real and could live here with me. Suddenly it happened. The little wooden boy came to life. Geppetto screamed with joy and laughter of happiness, said, Welcome, I'll call you Pinocchio. Geppetto helped Pinocchio dress up, gave him some books, kissed him on the cheek, and sent him to school to learn to read and write. But he warned him, as soon as the school finishes, Pinocchio will come home. Pinocchio said yes, and happily walked towards the school. اسکول جاتے ہوئے پینوکیو نے دیکھا کہ چوراہے پر کٹھ پتلیوں کا تماشا ہو رہا ہے۔ وہ بھی ان میں شامل ہو گیا اور اتنا اچھا ناچا کہ کٹھ پتلیوں کے مالک نے اسے 5 سونے کے سکے دیے۔ پینوکیو حیران رہ گیا اور صرف یہ سوچنے لگا کہ جب یہ سکے جپیٹو کو دوں گا تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ اسکول کے قریب اسے 2 خراب آدمی مل گئے۔ چونکہ وہ ایک سیدھا سادھا انسان تھا، دونوں آدمیوں نے اسے قائل کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ ایک سرائے میں جائے، وہاں کھانا کھائے اور پھر وہیں سو جائے۔ کھانے کے بعد پینوکیو کو نیند آنے لگی اور وہ آسانی سے سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اب وہ ایک امیر آدمی ہے اور وہ اور اس کا باپ جپیٹو بغیر کسی مشکل کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ On the way, Pinocchio noticed that there was a marionette show in the square. He joined them and danced so well that the puppet owner offered him 5 gold coins.
Pinocchio was amazed and only thought how Geppetto would be happy when he gave him the coins. Near the school, Pinocchio found two bad men. Because he was very naive, the two men persuaded Pinocchio to go to a hostel to eat and then to sleep. After eating, Pinocchio became sleepy and fell asleep easily. He dreamed that he was very rich and that he and his father Geppetto were now living without difficulty and were very happy. जब वो बेदार हुआ तो उन लोगों ने पिनोकियो को राजी कर लिया कि वो सोने के सिक्कों को किसी जगह दफन कर दे जिस जगह के बारे में वो जानते थे, और उससे कहा, यहाँ दफन शुदा सिक्के पैसों का दरख्त बन जाएंगे और आपके बूढ़े और थके हुए वालिद को कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिनोकियो ने ऐसा ही किया और सोने के सिक्कों को पैसों के दरख्त में बदलने का इंतज़ार करने लगा। उसने तवील इंतज़ार किया, यहाँ तक कि वो थक हार कर सो गया। जब पिनोकियो सोया हुआ था तब वो शैतान आदमी नमूदार हुए और सोने के सिक्के लेकर चले गए। जब पिनोकियो जागा और उसने देखा कि सिक्के जा चुके थे, तब वो रो पड़ा। वो खौफ के मारे घर भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि जेपेट्टो उससे नाराज और रंजीदा होगा। When he awoke, these men persuaded Pinocchio to bury his gold coins in a place that they knew and said to him, "The coins buried here will become a tree of money, and never again your father, who is old and tired, will need to work." Pinocchio did so and waited for the gold coins to turn into a money tree. He waited a long time until, tired, he fell asleep. The evil man appeared and took the gold coins while Pinocchio was asleep. When he woke up, Pinocchio saw that the coins had been taken away and he cried. He didn't want to go home for fear that Geppetto would be angry and sad with him. ये जाने बगैर कि वो क्या करे, पिनोकियो ने चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे नीले रंग के कपड़ों में मलबूस एक औरत मिल गई जिससे उसने मदद की दरख्वास्त की। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो तो नीली परी थी। परी ने कहा कि वो उसकी मदद करेगी और उससे पूछा कि उसके वालिदैन कौन हैं और वो कहाँ रहता है, जिस पर पिनोकियो ने जवाब दिया, मेरे पास मकान नहीं है और ना ही कोई साथ रहने वाला है। नीली परी को एहसास हो गया कि पिनोकियो झूठ बोल रहा है क्योंकि अब उसकी नाक बढ़ने लगी थी। नीली परी ने जवाब दिया, अपने बाप के घर जाओ, एक अच्छा लड़का बनो और फिर कभी झूठ मत बोलना। पिनोकियो ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा और उसकी नाक फिर से अपने असली साइज पर आ गई। Without knowing what to do, Pinocchio began to walk until he found a lady dressed in blue, whom he asked for help.
What he did not know was that she was the blue fairy. The fairy said she would help him and asked him who his parents were and where he lived. To which Pinocchio replied, I have no house and no one to live with. The blue fairy realized that Pinocchio was lying as his nose began to grow. The blue fairy replied, Go home to your father, be a good boy, and do not lie anymore. Pinocchio promised that he would, and his nose returned to its normal size. घर वापस जाते हुए पिनोकियो तफरीही पार्क में रुक गया और उसकी नाक फिर बढ़ने लगी. पार्क में मालिकों ने उसे बताया कि वो अपनी पसंद की तमाम आइसक्रीम खा सकता है, लेकिन जो बात उन्होंने उसे नहीं बताई थी वो ये थी कि आइसक्रीम खाकर वो गधे में तब्दील हो जाएगा. पिनोकियो उस वक्त तक खाता रहा जब तक कि वो मज़ीद नहीं खा सकता था, और जैसे ही वो गधा बना उसे एक सर्कस में फरोख्त कर दिया गया. सर्कस में उसे सख्त मेहनत करने पर मजबूर किया गया और उससे बदतमीजी की गई. जल्द ही ऐसा हुआ कि वो चलने के काबिल भी न रहा. जब वो सर्कस में मज़ीद काम करने के काबिल न रहा तो मालिक ने उसे समंदर में फेंक दिया. जैसे ही वो समुंदर में गिरा वो फिर से लकड़ी का लड़का बन गया. Back at home, Pinocchio stopped at an amusement park, and his nose began to grow again. In the park, they told him that he could eat all the ice cream he wanted. What they did not tell him was that the ice cream would turn him into a donkey. Pinocchio ate until he could no longer, and soon he became a donkey. He was sold to a circus. In the circus, he was forced to work hard and was so mistreated. Shortly thereafter, he could not even walk. Since it no longer served to work in the circus, the owner had him thrown into the sea. As soon as he fell into the sea, he became a wooden boy again. एक व्हेल मछली वहाँ से गुजरी और उसने पिनोकियो को देखा तो उसे खाना समझकर निगल गई. फिर क्या हुआ कि जेपेटो ने पिनोकियो को ढूंढना शुरू किया और वो पिनोकियो को ढूंढता हुआ व्हेल मछली के पेट तक पहुंच गया. जेपेटो बेचारा बड़ा कमज़ोर और बीमार था और एक मछली जो पहले ही से वहाँ मौजूद थी उसने कहा, तुम दोनों मेरी पीठ पर चढ़ जाओ तो मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगी. उन दोनों ने ऐसा ही किया और जब वो घर पहुँचे तो पिनोकियो ने जेपेटो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जब तक कि वो ठीक न हो गया. नीली परी फिर से नमूदार हुई और ये देखकर कि पिनोकियो जेपेटो के साथ अच्छा सलूक कर रहा है बोली, चूँकि अब तुम एक अच्छे लड़के बन गए हो तो मैं तुम्हें सचमुच का लड़का बना दूंगी. और उसने ऐसा ही किया और पिनोकियो सचमुच का लड़का बन गया. जेपेटो को आखिरकार बेटा मिल गया जिसकी वो ख्वाहिश रखता था
और वो दोनों हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। A whale that passed by saw Pinocchio and swallowed it, thinking it was food. What happens next is that Geppetto began to look for Pinocchio and ended up going to the belly of the whale. Poor Geppetto was very weak and sick, and another fish that was also there said, "Come up, both of you, jump on my back, and I'll take you home." They did so, and when they reached home, Pinocchio took very good care of Geppetto until he was well. The blue fairy appeared again, and seeing that Pinocchio had been so good to Geppetto, said, "Since you are a good boy now, I shall make you a real boy." So, Pinocchio became a real boy again. Geppetto finally had the son he longed for, and the two of them were happy forever. प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहने से पहले याद दिला दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। Dear listeners, the story ends here. I would like to remind you to subscribe to my channel. Thank you. Bye for now.